Hello friends, welcome back to this series of lecture. I am Gaurav Singh Adana. This is the 56th lecture of this series, and in today's lecture we would continue with section 210 of the CRPC. Now let's see section 210 of the CRPC. When in a case instituted otherwise than on a police report, when in a case instituted otherwise than on a police report, herein after referred to as a complaint case, it is made to appear to the magistrate during the course of the inquiry or trial held by him that an investigation by the police is in progress in relation to the offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. The magistrate shall stay, it is mandatory written. The magistrate shall stay the proceedings of such inquiry or trial and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation. So read it again. When in a case instituted otherwise than on a police report. Otherwise than on a police report means what? Not only the complaint, it include information also, information case. But here bracket में लिखा है here in after referred to as a complaint case. तो इस section के लिए हम complaint case मान रहे हैं. But otherwise than on a police report it include both. So here also they are not writing complaint case and information case. दोनों नहीं लिखा but that will also include the information case also. It is made to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him. Even if the magistrate is at the stage of trial, अगर trial stage पे है तब भी वो stop करेगा. Inquiry stage पे है तब भी stop करेगा और trial stage पे पहुंच गए then also he will stop the proceedings. It is made to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him that an investigation by the police is in progress in relation to the offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. Means investigation is going on for the offence. Investigation is going on by the police for the same offence for which he is conducting the inquiry or trial. जिसके लिए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट कर रहा है उसी केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की जा रही है. द मजिस्ट्रेट शैल स्टे द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation. So that is very clear. Means I am magistrate. I am conducting the trial or the inquiry upon a information or complaint for an offence. So while I am in the process of inquiry or trial, someone has informed me. Suppose public prosecutor informed me. Maybe police officer informed me, or maybe I myself came to know about it through the newspaper or whatever, that for the same offense the police investigation is going on, be it on my own area. अगर मेरे एरिया में हो रहा तब तो मुझे पहले से पता रहेगा बिकॉज SHO इज इन माई एरिया. मे बी ऐसी सिचुएशन हो सकती है ट्रांसफर होके आया हूँ मैं उस टाइम मुझे नहीं पता है. So whatever be the situation, whether it is in my area or some others magistrate's area, the investigation is going on for the same offense, and it is important that should be going on for the same offense and same case. Then in that case, first of all I will stay the proceedings. Second, I will issue order to the investigating officer to submit the investigating report before me. Now the officer he is still in the course of investigation, so he at that point at the most he could submit the status report. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने ऑर्डर पास किया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सबमिट करेगा, ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट. उसके बाद he would continue with the investigation, and as long as he would continue with the investigation, my trial or inquiry would be stayed. Now thereafter, when he completes the investigation, he would submit the police report to me, and after that the second and third clause has to be seen. So write down about the section 210 clause 1 first, then we would go for clause 2 and 3. The purpose of section 210 is to prevent
the multiplicity of proceedings and also to prevent a conflict of judgment. In the case if both complaint or information proceedings as well as investigation proceedings takes place and the final inquiry or trial are done separately against the same accused, then since in both the cases the evidences may differ, there is a possibility of conflict of judgments. Therefore, the rule provided in section 210 clause 1 is that when the judicial magistrate conducting the complaint or information proceedings is satisfied that for the same case police investigation is also going on. For the same case, police investigation is also going on. Then he shall stay the proceedings and thereafter seek a police report from the investigating officer. The investigating officer will file the status report and will continue the investigation. As long as the investigation goes on, the complaint or information proceedings will continue to be stayed. So that's it about the clause 1. Now let's see clause 3 first. If the police report does not relate to any accused in the complaint case, or if the magistrate does not take cognizance on any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provisions of this code. So in this we have to see what all situations are possible. एक सिचुएशन है कि एक पुलिस रिपोर्ट फाइल हुआ और पुलिस रिपोर्ट में जो पुलिस ऑफिसर ने किसी और एक्यूज के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लगाया. ऑब्वियसली द एक्यूज इज नॉट कॉमन, तो उस केस में क्या होगा? अब जब पुलिस रिपोर्ट लगाई है उसमें एक्यूज अलग है, तो उधर का जो एरिया मजिस्ट्रेट है वो उसमें कॉग्निजेंस ले लेगा. दैट एरिया मजिस्ट्रेट वुड कंडक्ट द ट्रायल सेपरेटली. और जिस मजिस्ट्रेट ने स्टे किया था प्रोसीडिंग्स, दैट वुड रिवाइव विद द प्रोसीडिंग्स एंड कंटिन्यू विद द ट्रायल. और ये वाला ट्रायल कंप्लेंट ट्रायल की तरह चलेगा. एंड द अदर ट्रायल, क्योंकि अदर एक्यूज्ड का नेम आया है तो उसके एरिया मजिस्ट्रेट वुड कंटिन्यू एज trial as a police report trial. So here in this situation the joinder of trial would not take place. Why? Because the accused are different. But ऐसा भी हो सकता है कि police report is filed against the same accused, but the police report is in the form of the closure report. In this situation the accused is same, accused same है, पुलिस ऑफिसर ने फाइल कर दी क्लोजर रिपोर्ट. पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी. अब मजिस्ट्रेट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया नहीं था उस क्लोजर रिपोर्ट पे, तो ट्रायल का कोई मतलब बनता ही नहीं है. सो देयरफॉर इन दैट केस द पुलिस रिपोर्ट केस इज क्लोज्ड. इन दैट केस द पुलिस रिपोर्ट केस इज क्लोज्ड बिकॉज उस पर कॉग्निजेंस लिया ही नहीं गया था, तो ट्रायल का कोई मतलब ही नहीं बनता. सो हियर देयरफॉर द कंप्लेंट केस वुड रिवाइव. द कंप्लेंट case would revive and you would continue with the complaint trial. So these are two possibilities that are given in the third clause. So accused is same, दो situation हो सकती हैं. If police officer filed the closure report, accused same है और police officer filed the closure report, चार्जशीट नहीं फाइल की, closure report फाइल की उसने. दो situation हो सकती हैं इसमें. The magistrate may take cognizance और मजिस्ट्रेट मे नॉट टेक कॉग्निजेंस. जैसे कि आयुषी मर्डर केस में था ना, ये क्लोजर रिपोर्ट लग गई थी, उसके बाद भी उसने मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया था. सो इन दैट सिचुएशन द क्लॉज 2 विल अप्लाई बिकॉज द एक्यूज्ड इज द सेम, टेक कॉग्निजेंस. बट सपोज इफ ही डज नॉट टेक कॉग्निजेंस देन क्लॉज 3 विल अप्लाई. सो इसमें सेकंड वाली सिचुएशन में जिसमें मजिस्ट्रेट मे नॉट टेक कॉग्निजेंस, इन दिस द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स विल रिवाइव. जो अदर केस है क्लोजर रिपोर्ट पे, उसमें तो वो तो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरा केस कंप्लेंट केस चल रहा है दैट प्रोसीडिंग्स विल रिवाइव. दैट इज कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन प्रोसीडिंग्स विल रिवाइव. रिमेंबर वन थिंग, we would move on to the third clause only after
द फर्स्ट क्लॉज, पहले फर्स्ट क्लॉज में जाएंगे जब ही हम थर्ड क्लॉज में जाएंगे। सेकंड सिचुएशन हमने देख ली थी कि पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई और चार्जशीट फाइल की उसमें, और नेम अदर एक्यूज्ड का था। मान लीजिए जो कंप्लेंट केस चल रहा था वो ए के खिलाफ था और स्टे कर दी प्रोसीडिंग्स, क्लॉज 1 अप्लाई हो गया, उसके बाद 3 में गई। अदर एक्यूज्ड का नेम आया जब चार्जशीट फाइल हुई उसमें, फिर जो एरिया मजिस्ट्रेट है, जैसे बी का नेम आया तो एरिया मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे ट्रायल चालू कर देगा। हियर इन दिस सिचुएशन जो ए के खिलाफ कंप्लेंट केस होगा वो रिवाइव हो जाएगा और ट्रायल उसके खिलाफ चालू हो जाएगी। अब इधर ही एक और क्वेश्चन एरोज हो जाता है। मान लीजिए कि जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की अदर केस में जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की कंप्लेंट थी ए के खिलाफ और पुलिस रिपोर्ट में ए और बी दोनों का नाम आ गया, पुलिस रिपोर्ट में ए और बी का दोनों का नाम आ गया, तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करके और ट्राई करेंगे टुगेदर। बट होना क्या चाहिए कि जो ए की ट्रायल है वो अलग होनी चाहिए और बी की अलग होनी चाहिए, बट इट विल गो विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, सो मजिस्ट्रेट प्रैक्टिकली उनको ज्वाइन कर देता है। सो बट द स्ट्रिक्ट रूल इज दैट कि जो कॉमन है उसके लिए ज्वाइन कर लो और जो कॉमन नहीं है फॉर दैट द ट्रायल वुड बी go on separately, but practically the magistrate would join the trials even if the accused are one of the accused is only the common one. So write down point about clause 3. After the filing of the police report there can be following situations. Number 1, the police report is in the form of a closure report and therefore the judicial magistrate does not take cognizance. In such a case, the complaint or information case will revive and go on as trial otherwise than on police report. तो ये पहला सिचुएशन था। और दूसरा सेकंड सिचुएशन, even if there is a closure report but the accused is same, the judicial magistrate may take cognizance on police report against the same accused. Then what? Then clause 2 will apply. Clause 2 में क्या है, that would be, we would see later. Now the third situation, the closure report was against some other accused and judicial magistrate took cognizance against that accused despite the closure report. Then complaint proceedings will revive and separate trial will be conducted. And with respect the other accused, a separate trial on police report will be conducted. Fourth situation is the police report was in the form of a charge sheet against some other accused. Then the judicial magistrate will take cognizance and two proceedings will go on. One upon the complaint and information, जो स्टे हुआ था that would upon complaint and information पे था, वो चल जाएगी जिसके खिलाफ थी कंप्लेंट एंड इंफॉर्मेशन, एंड अदर ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो अदर एक्यूज था जिसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट आई थी उसके खिलाफ चल जाएगी। नाउ द फिफ्थ सिचुएशन, इफ द पुलिस रिपोर्ट इज सच एज वन और सम ऑफ द एक्यूज्ड आर कॉमन एंड अदर्स आर नॉट, इन सच ए केस द रूल इज दैट clause 2 for the purpose of joinder of trial will apply only with respect to common accused and separate trial will conducted for the uncommon accused. But practically in such a case, the judicial magistrate actually joins the trial with respect to all the accused. Now here one more point to clear that some students were confused that it would amount to double jeopardy. Article 20 clause 2 of the Indian Constitution, डबल jeopardy लग जाएगा इधर, पर डबल jeopardy का तब लगता है जब कन्विक्शन हो जाता है और एक किसी एक्यूज्ड का सेम उस ऑफेंस में कन्विक्शन हो जाता है और हम दोबारा उसको कन्विक्ट करते हैं सेम ऑफेंस में उसके ट्रायल चलाने के बाद। सो हियर द डबल jeopardy would not apply because here in this situation there are two cases, they had not lost their identities, they are clubbed together. So ट्रायल में सबके एविडेंसेस रिकॉर्ड होंगे, सिंगल जजमेंट होगा,
बट पुलिस रिपोर्ट वाला केस उसका अलग पैराग्राफ होगा जजमेंट का, और जो कंप्लेंट को आपने पुलिस रिपोर्ट में कंप्लेंट किया है उसका भी एक अलग पैराग्राफ होगा। बट जो सेंटेंस होगा दैट वुड बी ए single sentence. But if you give double sentence, then it would amount to double jeopardy. Now let's see clause 2. If a report is made by the investigating police officer under section 173. If a report is made by the investigating police officer under section 173 and on such report cognizance of any offence is taken by the magistrate against any person who is an accused in the complaint case, means it is the common accused. It is a common accused in the complaint case. The magistrate shall inquire into or try together the complaint case and the case arising out of the police report as if both the cases were instituted on a police report. So that is one situation. तो जितने भी situations लिखे हैं उसमें एक और situation ऐड करना पड़ेगा, that the police report is filed in the form of charge sheet and the accused is common. And the accused is common and magistrate takes the cognizance on the police report. He had already taken the cognizance on the complaint or information, but the accused is the same. Then they are saying that the complaint proceedings will revive and the police report case will also continue, but the complaint proceedings would convert into the police report case. मान लो इधर 191 क्लॉज ए में कॉग्निजेंस हुआ, आफ्टर दैट द कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स विल गोइंग ऑन। अब कंप्लेंट में सेक्शन 200 का एग्जामिनेशन होगा, देन सेक्शन 202 में भी एविडेंसेस गैदर होंगे, इसमें स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए 204 हो चुका है, इशू ऑफ प्रोसेस हो चुका है, एंड यू आर ऑलमोस्ट एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग. And at this stage, the magistrate came to know that the investigation is going on. Then the magistrate would stay the proceedings here, and he will see the report from the police officer. So he would stay the proceedings here. Now, investigation में somewhere here the police report is filed. A police report में the accused would be same. Suppose the accused is same. The accused is same. अब क्या होगा? अब उसमें क्या होगा? 190 clause 1b में cognizance and this complaint वाला case will revive. So ये वाली जो proceedings चलेगी वो as a police report trial, और ये वाली जो proceedings है वो कैसे चलेगी also as a police report trial. अब now you must have to appreciate that evidences जो 202 वाली जो evidence हैं जो complaint case में थे, और इधर जो पुलिस रिपोर्ट वाली वो तो अलग है। चलो इनका क्या होगा? ये अब ट्रायल कन्वर्ट हो गया पुलिस रिपोर्ट ट्रायल में, अब इसके जो एविडेंसेस थे वो तो लिए ही जाएंगे क्योंकि पुलिस रिपोर्ट ट्रायल चालू हो गई है, तो उसी अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। बट जो कंप्लेंट केस के तौर पे जो एविडेंस लिए गए थे उनका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दीज एविडेंसेस? सो ऑब्वियसली दे वुड बी टेकन ऑन टू द रिकॉर्ड, they would taken on the record and it would be deemed as they are filed on the police report. जो पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट हुई थी उसी में ये फाइल किए गए, इस तरीके से ये भी रिकॉर्ड पे लिए जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर 12 लग जाएगा, चैप्टर 12 इसमें नहीं लग सकता क्योंकि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स है। सो इन दिस द चैप्टर 12 would not apply, but for the purpose of trial it would deemed as it is a case of police report. It would be deemed as the material gathered on the police report. जो material ये है ये ऐसा समझा जाएगा, it was gathered by the police and submitted in the police report. So what I am saying is that 200 में किसी विटनेस ने बयान दिया, कंप्लेनेंट ने भी बयान दिया, तो कंप्लेंट केसेस में क्या होता था जब ट्रायल होगा तो इन विटनेसेस को दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, और जो प्रीवियस स्टेटमेंट है 202 वाला दैट वुड बी यूज्ड फॉर द corroboration, contradiction, etc. There the chapter 12 would not apply, therefore the 162 would not be applicable. So therefore these statement could also used for corroboration also. So these statement under section 200 202 that would not hit by chapter 12 of the CRPC, so that could also use for corroboration also.
So these statement also used for corroboration, contradiction, etc. When these witnesses present at the trial stage. Now I am saying that once Section 210 Clause 2 applies, then this would convert into a police case. So at the trial stage, these witnesses have to appear or not. और ये जो डॉक्यूमेंट्स स्टेटमेंट्स जो सबमिट किया है ये माना जाएगा एज इट इज सबमिटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट. So one small point that arises is that these statements would be considered as it is submitted as police report. तो क्या 162 इनके ऊपर लग जाएगा? तो यही बताया था कि इसमें चैप्टर 12 का इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं मानेंगे. So even though this is the police report on the police report trial going on, these witnesses, when these witnesses appear here at the trial stage, section 162 would not apply on their previous statements. So their previous statement can be used for corroboration, refreshing memory, contradiction, everything. लेकिन ये जो केस है पुलिस रिपोर्ट वाला केस, इसमें जो स्टेटमेंट दिया था अगर ये सेम विटनेसेस थे इसमें, तो इन दैट केस 161 का होगा. So that would hit by section 162. Now write down the sixth point. As section 210 clause 2, as per section 210 clause 2, if the cognizance is taken on police report against the same accused, then the complaint case will revive and the trial will conducted in complaint case also as if it was a police report. The documents of section 200, 202, etc. will be deemed as if they were filed on police report. They will not be hit by section 162. But these earlier statement can be used for section 157 Indian Evidence Act purpose, that is contradiction. Write it in bracket from here to here. Paragraph change. Once the joinder has been done, neither of the cases will lose its identity. Rather, both the trials will be conducted as a trial on police report, and the evidence of each case will be proved for that particular case. And here it is corroboration. 156, that is for corroboration. So main point is this: they will not hit by section 162. This is this here जो इस bracket के अंदर है, that is the clarification of that कि corroboration के लिए भी use हुए होंगे वो statements. Now write down a case in this. Harjinder Singh versus State of Punjab, 1985 Supreme Court. It was held that in the case of such a joinder of trial, the effect will be that the evidence of one case will be recorded first, and then the evidences of the other case will be recorded. However, the common witnesses will be examined only once. जो कॉमन विटनेसेस है उसको बारी बारी से दोनों के लिए रिकॉर्ड नहीं करेगा, और दैट विल बी एग्जामिन्ड वंस एंड दोनों के लिए रिकॉर्ड होगा एक ही बार. और यही एक बेनिफिट है क्योंकि केस सेम है तो ज़्यादातर विटनेसेस सेम होंगे क्योंकि ऑफेंस सेम है. सो मोस्ट ऑफ द विटनेसेस विल बी कॉमन. सो आपको दो बार एग्जामिनेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. आप एक बार एग्जामिनेशन करो, क्रॉस एग्जामिनेशन करो, एंड दैट विल बी डन, एंड दैट वुड बी यूज्ड फॉर बोथ द केसेस. So that is the benefit of the joinder of the trials. Then the judgment will be a single judgment, and for both the cases, two separate paragraphs will be recorded in the judgment, and the sentence will be common. The court will ensure by exercising its power of Section 165 Indian Evidence Act and 311 CRPC that there is no conflict of judgment. So that is all about this topic. So this topic is over, and next topic is very small topic. What is the ground for taking cognizance? Cognizance कौन लेगा ये तो हम देख ही चुके हैं. Now what is the ground of taking cognizance? अगर एक simple sentence में समझें तो उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें. The ground for taking cognizance is that there should be a prima facie case.
एक प्रेमा एफएसआई केस होना चाहिए कॉग्निजेंस पे लेने के लिए. So we would continue this from the in the next lecture. Thank you guys for watching this lecture.